Hello, hi, my name is Fran. I am a contact improvisation facilitator. I originate from Italy, but I've been traveling around the world for the last many years. I ended up here in the outskirts of Jaipur at the Emeralds Academy, Sanjana Foundation, for a 1 week long program about contact improvisation in kids. How can we use this tool to help kids get more comfortable with sharing touch and sharing weight in a non-socialized way? I feel this is a very important project because personally I've seen a lot of difficulties in navigating interpersonal relationships that are based on, well, they don't really have much touch going around. To do a 1 week, more or less, intensive workshop with the kids. We'll be meeting with them 2 hours a day every day and play around. So over the coming 8 days, we'll be exploring how to share space, how to be together in a non-verbal environment. So yeah, stay tuned for more. Hello, my name is Stella and I have a background in human rights organizations and working with kids and as well in dancing and doing Buto and contact improvisation. And with the kids I will be doing a lot of voice activation about movement games to really empower them to feel connected with each other and with their own strength and power. हेलो माय नेम इज़ ऐश्वर्या एंड आई एम अ कथक डांसर। तो मैं पिछले 1 हफ्ते से विन्यासा में हूँ। बच्चों के साथ हम लोग एक परफॉर्मेंस क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है डेयर टू ड्रीम। होता है ना यार, बचपन में अपने बहुत सपने होते हैं बट हम नॉर्मल ज़िंदगी की भाग दौड़ में वो सब भूल जाते हैं। हमारा कोशिश ये है कि हम बच्चों के सपने आप लोगों के सामने लेकर आएँ, जिससे शायद आप भी जब उनकी परफॉर्मेंस देखें तो आप भी अपने वो बचपन के सपने वापस से जी लें। और ये परफॉर्मेंस हो रहा है RIC जयपुर 2 Feb 6 PM। तो मैं वेट करूँगी आप लोगों का। मैं चाहूँगी आप लोग सब आएँ और बच्चों को सपोर्ट करें। हाय, मेरा नाम मनीष है। मैं एक डिवाइस थिएटर मेकर और परफॉर्मर हूँ। मैं मुंबई से आया हूँ। बहुत टाइम से सपना था कि मैं बच्चों के साथ काम करूँ और संजना फाउंडेशन और विन्यासा के थ्रू मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। हम यहाँ इन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं और उनके जो सपने इस प्रोसेस में से बाहर निकल के आते हैं उनको हम एक परफॉर्मेंस का शेप दे रहे हैं। ये परफॉर्मेंस होने जा रहा है 2 फरवरी को RIC में। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब जो ये देख रहे हैं प्लीज़ आइए, या फिर अपने जो भी जयपुर या आसपास के जो दोस्त हैं उनको प्लीज़ भेजिए इस शो के लिए। थैंक यू। Hello, my name is Sankalp Sharma. I'm founder at Vinyasa Earth. 2 years ago, I started this initiative where I wanted to bring art to the kids who do not have access to it, who do not even know if they could choose art as part of their profession or career, or just like get a chance to explore it. So we started 2 years ago working with underprivileged kids, and this year, which is our 3rd year, we are going to be working with the kids of our own village, which is very close to Vinyasa, the kids that have been nurtured by Emerald School, Sanjana Foundation, the teachers here. So I'm very excited to bring dance to these kids. You know, being a dancer myself, I always thought that I would love and I would want to share the knowledge that I have received in over years, and you will get to see it, what we create in the first week of February. So stay tuned. There is a lot of amazing stuff that is going to come out, and we are performing. I know that you are coming. If you do not come, I will keep spinning this guy around and around and around, and I will spin you as well.